Your first 3 years in corporate decide everything. Promotions, pay hikes, even mental peace. But most people waste them without realizing. They think it's just about learning the job, making friends and enjoying that first salary. But actually, these years decide so much more. I almost wasted mine too. First year as a fresher, I was in a maintenance project doing small fixes. Within months I thought, maybe IT isn't for me. Second year, project change हुआ और काम मिला Excel में test cases लिखना. Sounds boring, right? Trust me, it felt like career disaster. But this time I decided I will explore and understand every angle of the project. और सिर्फ 2 साल बाद I got promoted to team lead. शुरू के years में जो habits और mindset बन जाते हैं, वही आपके करियर की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं और गलत डायरेक्शन लेने से करियर बनने से पहले ही बिगड़ सकता है. So today, in this AI-driven world, let's talk about 5 things to focus on. So the next 30 years feel purposeful, not pressured. I want to share a quick story. बड़ी मुश्किल से मनाया है शेयर करने के लिए. When my husband got his first job, he was quite lazy by nature. His boss was extremely harsh and constantly pushed him beyond his limits. At that time, we both felt upset with the immense pressure so early in his career. But later, that strict behavior paid off. Within 2 years, his personality transformed and he was nominated multiple times for the Star of the Month award. Those initial years set the right foundation for him. आज शायद आप हार्श बॉस को एक्सेप्ट ना करें या आपको बेस्ट प्रोजेक्ट्स ना मिलें. बट रिमेंबर, हर प्रोजेक्ट में एक सरफेस लेवल होता है, जैसे बस रिपोर्ट बनाना, और एक डेप्थ होती है जहां आप डीप जाते हो और समझते हो कि वो रिपोर्ट कैसे डिसीजंस को शेप करती है. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट और सही अप्रोच ज़रूरी है. मैंने भी जब सिर्फ अपना काम नहीं बल्कि पूरे प्रोजेक्ट के सराउंडिंग प्रोसेसेस समझने स्टार्ट किए, तब मेरी विजिबिलिटी बढ़ने लगी. सो पुश योर लिमिट्स अर्ली. जब स्टेक्स लो होते हैं, मिस्टेक से सीखना आसान होता है. मोस्ट पीपल स्टॉप लर्निंग आफ्टर कॉलेज एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे गेट स्टक. जॉब स्टार्ट होते ही लगता है पढ़ाई खत्म, अब बस काम. बट द ट्रुथ इज, इफ लर्निंग स्टॉप्स, ग्रोथ भी रुक जाती है. विनर्स वही हैं जो कॉलेज के बाद भी स्किल्स अपग्रेड करते रहते हैं, चाहे 30 मिनट्स हो या 1 आवर. स्पेंड सम टाइम लर्निंग. Think of it like the book Atomic Habits explains. Small, consistent efforts create compounding results over time. Every successful professional knows you have to be a lifelong student. अगर आप unmarried हो, आपके पास एक secret weapon है, time flexibility. Believe me, ये habit शुरू करना easiest इसी phase में होता है. Because with time, responsibilities only grow. मेरे एक colleague ने free time में data analysis का short course किया. Just 6 weeks later, वो टीम के सबसे इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड्स बनाने लगा और उसकी विजिबिलिटी मैनेजर के सामने डबल हो गई. Another thing, सेल्फ लर्निंग isn't just टेक्निकल स्किल्स, इट्स ऑल्सो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये स्किल्स आपको रिप्लेसेबल से इंडिस्पेंसिबल बनाते हैं एंड यू फील कॉन्फिडेंट विद दैट एक्स्ट्रा एज. Later in the video, I will show you exactly how to fit learning, work and personal time into your day without feeling overwhelmed. We have spoken about building skills, but none of that matters if your health doesn't support you. Undoubtedly, the transition from college to corporate is big. It changes your routine, your priorities, and even your lifestyle. And you need time to adapt. पर इस सारे adjustment के बीच में सबसे important चीज़ ignore हो जाती है, your health. And not just physical, but mental too. Don't wait for a health problem to force you into action. बस थोड़े से डिसिप्लिन से आप मूवमेंट की हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, फिर चाहे वो वर्कआउट हो, ब्रिस्क वॉक या फिर योगा. WHO भी रिकमेंड करता है कि 30 मिनट्स ऑफ मूवमेंट डेली इज एनफ टू इम्प्रूव योर ओवरऑल वेल-बीइंग. आई हैव सीन 25-year-olds टुडे more stressed and exhausted than I was at 40. And that's scary. Just remember, once you start working, your parents won't be there to remind you to rest, eat, or move around. So take charge of your health from day one. It's not just for fitness, it's for better energy, focus, productivity, and peace of mind. And it's 100% your responsibility. I know what you are thinking. Calm, commute, family, learning, health.
24 घंटे में ये सब फिट कैसे होगा? सब फिट हो सकता है, बस प्रायोरिटीज शफल करनी होती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम ट्रैक ही नहीं करते। ज़्यादा टाइम कहाँ चला जाता है? स्क्रॉलिंग, एक रील खत्म दूसरी शुरू, कभी रियलाइज ही नहीं होता कि 1 घंटा कब निकल गया। Let me share an example of a practical schedule considering 9 hours in the office and 1 hour commuting. Take a quick screenshot and see. There's enough time for relaxation, TV, and even a dedicated slot for exercise and self-learning. And if on some days you have to stay back for 1 to 1.5 hours, no stress. Just shuffle this evening time a bit. This is just an example. Take some time to make your own schedule so you can use your day better and grow consistently. Let's be honest. आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ एक हैंडसम इनकम दिखी, लेकिन ये आपका पैशन था या नहीं, शायद कभी सीरियसली सोचा ही नहीं। सो व्हाट इज़ पैशन? ये वो काम है जो आपको एक्साइट करता है, ये आपको इंगेज रखता है और दिन के एंड में एक सेटिस्फैक्शन का फील देता है विदाउट ड्रेनिंग योर पीस ऑफ माइंड। एंड हियर्स द ट्रूथ, most people realize they are in the wrong lane only after years when changing direction becomes harder. I have heard colleagues venting in office washrooms, not about workload, but about feeling stuck in work they didn't even like. Passion identify करना easy नहीं होता, इसलिए सबसे पहले जो आपने field choose किया है उसी में explore करो. Consider the first 3 years as a learning phase. Adapt, learn as much as you can and give your best. बट अगर उसके बाद भी मोटिव और हैप्पीनेस मिसिंग लगे, तब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। पैशन इज समथिंग यू मस्ट रियलाइज योर सेल्फ, नो वन एल्स कैन डिफाइन इट फॉर यू। सो मेक अ लिस्ट ऑफ वर्क दैट जेन्युइनली मेक्स यू हैप्पी एंड ड्राइव्स यू। इट मे मीन अ रोल चेंज, फर्दर स्टडीज और इवन अ कंप्लीट career shift. Prepare yourself, create a financial backup that gives you the freedom to take that step and move when you are ready. Don't stay just out of fear, otherwise you will end up complaining all your life and chasing happiness. Because the truth is, your first 3 years are like wet cement. जो shape आप अब देते हो वही आपके next 30 years का base बनेगा. And if even one of today's points struck you, start applying it right away. Trust me, future you will thank you for it. I keep making videos like this to help you grow in corporate without losing your peace of mind. So if you found value here, hit subscribe and turn on the bell so you don't miss the next one.